Morning, students. Welcome back to online learning. I have been really happy looking at all the responses from most of you. You have been really active in learning, and I'm so proud for this. Okay, so today we are reading about modal verbs. So, after going through your RC papers, this was another topic which I thought you need little brushing on or you need to learn again. Okay. So, we are learning about modal verbs today. Before starting, I would want everyone to take out their notebooks and pens and be ready with their learning hats. Okay, so the first thing of every lesson is the objective. We will be able to use modal verbs in the sentences. We will be given sentences and we will be using different modal verbs in those sentences, whatever suits the best. Okay, now some of you might ask कि दीदी modal verbs है क्या? These words. I hope all of you might have seen these words many times. May, should, can, will, might, would, must, can. Okay, all these verbs are called modal verbs. Okay, these are not like the normal verbs. कोई action words जैसे normal verbs नहीं होते. These are called modal verbs. Okay, can, should, might, would, shall. Okay, great. Now the question comes, where do we use modal verbs? इनको हम कहाँ पे use करते हैं? Okay, so the modal verbs are used to express ability, possibility, permission, advice or obligation. Ability मतलब skill to do something, कुछ करने की योग्यता. जैसे भौमी दीदी डांस कर सकती हैं, उनकी एबिलिटी है डांस करने की. ओके, here we can use modal verbs. Possibility मतलब a thing that has high chances of happening. किसी चीज की होने की जब संभावना हो, मतलब आज बारिश हो सकती है, उस बात की संभावना है. Possibility. Then comes permission. All of us know what permission is. You take permission from teachers when you move out of the class now. Permission means allowing someone to do a particular thing. Anumati, किसी को कुछ करने की इजाजत देना. Then comes advice, which is suggestion or salah. Okay. Then last comes obligation. Now, what is obligation? Morally or legally bound to do something. A duty. Okay, obligation मतलब जो हमें करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है. दैट इज आवर ड्यूटी. इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. ओके, सो द 5 थिंग्स आर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, परमिशन और ऑब्लिगेशन. जब भी हम इन सब चीजों की बात करते हैं या ये सब चीजें यूज करते हैं, then what do we use? Modal verbs with them. Okay, now there are different modal verbs. We will learn which modal verbs we use with all these. Okay, before that, pause the video and write this down. Okay, but I have also written in Hindi for you to understand better. So, जिसको हिंदी में समझ आता है वो हिंदी भी लिखिए साथ में. Great. We shall move ahead. Okay. Today we are reading about just 3 types of modal verbs: can, could, and must. Okay, great. So now let's begin with can. Where do we use the word can? आपने सुना होगा ना, दीदी I can't do it. Can you do this for me? Can you come back fast? So you have heard the sentences. Now the question is, हम कहाँ पे use करते हैं can को? The verb can is used to express ability, possibility to make a request or to ask for permission. And it can even be used to make an offer or suggestion. तो जो हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी थी उन सब के लिए यूज होता है बेसिकली. ओके, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन के लिए, पूछने के लिए, या तो कुछ
सजेस्ट करने के लिए. ओके, दिस इज वेयर वी यूज कैन. And the negative form for can is can't. C-A-N apostrophe T. It can be used to express inability or impossibility. अभी ability दिखा रहे हैं, जैसे I can dance, मतलब मैं नाच सकती हूँ. अगर हमें इसका उल्टा दिखाना है कि मैं डांस नहीं कर सकती, तो what will I say? I cannot dance. ये है inability. Okay, I cannot dance. So basically, जब हम ये बातें हम प्रेजेंट में करते हैं, ठीक है, जब वो चीज उसी टाइम हो रही होती है प्रेजेंट टेंस में. सो वी यूज कैन. जब हमारी एबिलिटी और पॉसिबिलिटी कब की है? प्रेजेंट टेंस की. आई कांट डांस मतलब मैं अभी भी डांस नहीं कर सकती. इट इज नॉट सेइंग मैं डांस नहीं कर सकती थी या तो मैं डांस नहीं कर पाऊंगी. इट इज सेइंग आई कांट डांस मतलब मैं अभी डांस नहीं कर सकती. ओके, जब भी चीज प्रेजेंट में हो रही है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, परमिशन, सजेशन, वी यूज कैन. ओके, नाउ can has two forms, affirmative and negative. Affirmative always means but when we say it in a positive sense. Can, I can, you can. Positive है ना. Negative मतलब जब हम not इस्तेमाल कर देते हैं, can't. So अगर हम can में not इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बन जाएगा can't. Uses to express ability or possibility, to ask for permission, make offer, suggestion, to express inability or impossibility. Okay, this is just the summary of what I taught you already. Great. Now, looking at some examples will give you more clarity. Okay, so let's see where we have used can. Can you come home early today? The person is making a request. Can you come home early today? Can you help me? It is again a request. I can call you later. It is ability. मतलब मैं कॉल करूंगी, मैं उसके काबिल हूं, मैं कर सकती हूँ कॉल. I can call you later. Steve can't fix the phone. Inability. Steve नहीं कर पा रहा है. Steve can't fix the phone. Marion and Louis can jump very high. It is ability. उनका एक स्किल है, वो बहुत तेज जंप कर सकते हैं. Daria can play the piano since she was 6 years old. तो she can play the piano कब से बजा रही है? जब वो 6 साल की थी. It doesn't mean कि वो तब बजाती थी. It means कि वो अभी तक बजाती है. Okay, all this is present tense, जो अभी तक हो रहा है. Lisa can come early if you want. She doesn't have homework today. Can come early मतलब अभी अगर तुम उसको बुलाओगे वो जल्दी आ सकती है, उसके पास काम नहीं है. All this is present tense. अभी की हम जब बात कर रहे हैं. Okay? Great. Now, copy down all these things and we'll move to our next modal verb. Our next modal verb is could. तो हमने can कर लिया, अब हम could कर रहे हैं. Okay. Before reading, very simple thing I will tell you about could is, उसका use can की तरह ही होता है पर past tense में. जब हम ability, permission मांगते हैं पर वो है past tense में जो बीत चुका है, तो हम यूज करते हैं could. फॉर एग्जाम्पल अगर है I can call you later, ये प्रेजेंट की बात है या तो फ्यूचर की. पर अगर हम बोलते थे I could call you later तो पास्ट की बात हो जाती कि मैं तुम्हें कॉल कर सकता था. ओके, सो could is basically can in the past form and also in a more polite way. अगर आपको और प्यार से बात करनी है और तहजीब से बात करनी है, so we use could. Now, when you talk to your teachers or somebody senior, you can always prefer using could. Ma'am, can I do this for you? के बजाय you can say, ma'am, could I do this for you? Okay, मतलब past tense में और भी ज़्यादा polite way में. It can be used to talk about ability and permission in the past. Also, just like the modal verb can, the modal verb could can be used to make questions, request, suggestions or offer. But
in a more polite way. और भी जब हम तमीज और प्यार से बात करते हैं तो हम could इस्तेमाल करते हैं. It can also be used to talk about possibility but not as strong possibility that the one expressed with can. So if you say it can rain and if you say it could rain, तो आप तो पहले पास्ट की बात करें और दूसरा पॉसिबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती. किसी भी चीज की होने की चांसेस जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम उसके साथ कैन का यूज करते हैं. ओके इसका नेगेटिव फॉर्म क्या है? कुडंट. ओके ग्रेट. सिंपल. कुड कब यूज होता है? जब हम कैन की चीजों में यूज होता है, पर जब हम और पोलाइटली बात करते हैं या तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं. ओके great. This is again the summary. Could and couldn't. To make request, suggestions or offer in a polite way और भी ज़्यादा polite way में. Could you please do that for me? एक तो होता है can you pass the salt? दूसरा होता है could you please pass the salt? जब आप और भी प्यार से बात करते हैं you use could. Okay. Let's quickly look at the examples. One. I could go to the market with you if you would like. So the person और भी प्यार से बात करें. I can go to the market नहीं. I could go to the market. अगर तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे साथ market चल सकती हूँ. Andy was free at the moment, so she could go to the movies with her. Could I go play with Samarth? तो अभी request कर रहे हैं कि क्या मैं समर्थ के साथ जाके खेल सकती हूँ. I couldn't jump very high when I was little. अभी when I was little मतलब जब मैं छोटी थी. Past की बात कर रहे हैं. तो बचपन में जब मैं छोटी थी मैं ज्यादा तेज नहीं कूद पाती थी. couldn't. It could rain tomorrow. कल बारिश हो सकती है. ओके एक तो होता है it can rain. जब हम बोल रहे हैं it can rain तो मतलब ज्यादा चांसेस है. पर जब हम बोल रहे हैं it could rain तो मतलब थोड़े कम चांसेस है. ओके ग्रेट. नाउ copy this down and we shall move to our last modal verb for today which is must. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? Can and could. And the last modal verb for today is must. अब when do we use must? As you can look at the last word, जब भी कुछ बहुत जरूरी होता है, necessary होता है. The modal verb must is used when we talk about necessity. Necessity मतलब जरूरी, इसके बिना नहीं काम चलेगा. It is also used to talk about possibility but in a much more certain way. Additionally, this verb can be used to talk about advice and recommendation. जब हम किसी को advice कर रहे हैं तो हम must का इस्तेमाल करते हैं जब वो advice बहुत ज़रूरी है, जब वो बात बहुत ज़रूरी है. जैसे you must respect your parents. Okay, कोई option नहीं है, आपको करना ही चाहिए. Okay, and possibility. बच्चा देखिए पॉसिबिलिटी का यूज तीनों में होता है. ओके सपोज पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि कल बारिश होगी, तो हम बोलेंगे इट कुड रेन टुडे मतलब हो भी सकती है नहीं भी. एंड वी कैन से इट कैन रेन टुमारो मतलब काफी चांसेस हैं होने के. एंड व्हेन वी से इट मस्ट रेन टुमारो मतलब होनी ही चाहिए बारिश. तो पॉसिबिलिटी का यूज इसमें भी होता है पर और भी ज्यादा पक्के फॉर्म में कि होनी ही चाहिए मतलब होनी ही चाहिए. Okay, so you can use to advise, recommend or in possibility when we talk about something which is necessary, जो बहुत जरूरी है. This is again just the summary of what we read. Talk about necessity and its negative form to talk about things we are not allowed. जो चीज जरूरी है करना उसके लिए must, जो चीज करना हमें allowed नहीं है उसके लिए must not. Okay, You must not copy your homework from your friends. Allowed नहीं है करना तो हम बोलेंगे must not. Okay, great. Now we look at few examples to understand better. I must go. I have a doctor's appointment soon. अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है तो जाना बहुत जरूरी है. So the person is saying I must go. मुझे जाना ही चाहिए. You must not use mom's tablet without her permission. मम्मी से बिना पूछे you shouldn't take her tablets. You must not मतलब allowed नहीं है. The new film is great. You must see it मतलब मूवी इतनी अच्छी है कि तुम्हें देखनी ही चाहिए.
James must be a teacher. He knows a lot about science. Now there's this person, James, who is very good in science. So this person is saying कि he must be a teacher. उसे तो teacher ही बनना चाहिए. Okay? जब हम और ज़्यादा emphasize करते हैं, ज़रूरी है करके बोलते हैं, तो we use must. Great. So what are three things that we have done till now? Can, could, and must. Now, quickly, for 1 minute, close your eyes and revise the usage of can, could, and must. आंखें बंद करिए और सोचिए कि हम ये तीनों कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं. Okay? Great. And the last part for today is, of course, the exercise. I've given you these 10 questions and there are options in the bracket. You have to choose one option and fill it here. कैन कुड मस्ट के ऑप्शंस दिए हैं. आपको एक चूज करके सेंटेंसेस में देखना है. आपको देखना है कि क्या पास्ट की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे कुड, प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे कैन, अगर किसी ऐसी चीज की बात हो रही है जो बहुत जरूरी हमें करना चाहिए तो हम यूज करेंगे मस्ट. ओके, ग्रेट. बच्चा, do this work in your notebooks. Make sure you're writing the questions also. Okay, if you have any doubt you can reach out. I will wait for all the answers on WhatsApp. Happy learning, everybody. I will see you in the next class.